Gopi Jana Balaba Dini Bharat Hari Gopi Jana Balaba Dini Bharat Hari Yashodanana Raja Jana Ranjana Yashodanana Raja Jana Ranjana Yamana Tira Bana Chare Yamana Chira Bana Chare Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Gadadhar Shivasadi Bhaktami Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladev, Jaya Subhadra. Baladev, Jaya, Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jayam Vishnupad Pramukh Sattvajigacarya Astotar Satar Shishimad Abhay Charan Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Radha Madan Mohan Ki Shri Krishna Balaram Ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Shri Gaurnitai Ki
Shri Shri Prahlad Nishide, Nitai Gaur Prema. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories. Shri Shri Guru and Govinda. All glories to Shri. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Ojayam Diraye Nastapreshu Vajreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uchamasunke Bhaktir Bhagavati Naistike Idam Bhagavatam Nama Pranam Brahma Samhita Uttama Shloka Charita Chakara Bhagavan Rishi Niksayasya Salokasya Dhanyam Swasti Ayanam Maham. Reading from Srimad Bhagavatam. Translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Canto 10, Chapter 6, The Killing of the Demon Putana. Text 13. श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक संख्या 13 अध्याय का शीर्षक है पूतना। Charita Vyatika Stana Yasu Yadariya Kesham Charu Ujjain Prasaya Goste Nijarupam Mastita Rajhata Vajrapata Vitra Ivapatan Nipa Nisha Charitam Vyatita Stanu Vasur Nisha Charitam Vyatita Stana Vasur Vadaya Kesham Charano Bhujavapi Yadaya Kesham Charano Bhujavapi Vasarya Goste Nijarupam Astita Vasarya Goste Nijarupam Astita Rajato Ritra Ivapatan Rita
Vajrato Vritra Ivapatan Nisha Charitam Yatitas Tanor Vistasur Vadaya Kesham Charano Bhujavapi Vasarya Goste Nijarupam Astita Radrato Vitra Vipapatanika Madaya Kesham Charano Bhujavapi Sarya Goste Nijarupa Mastita Jato Vritra Iva Patamripa Sacharitam Yatitasana Visur Daya Kesham Charano Bhujavapi Jato Vritra Vapatamripa Maharajas. Charitam Yatitasana Visur Vritra Chari. The Rakshasi, Itam, in this way, Yatitastana, being severely aggrieved because of the pressure on her breast, Yasu lost her life. Vyadaya, opening her mouth wide, Keshan, bunch of hairs, Charano, her 2 legs, Bhujo, her 2 hands, Api, also Prasarya, expanding, Goste, in the pasturing ground, Nijarupa Astita, remained in her original demoniac form. Vajra'ata,
killed by the thunderbolt of Indra. Vritrasura, as if a patak fell down. Ripa, O king. Translation: in this way, the demon Putana, being very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna, lost her life. O King Parikshit, opening her mouth wide and spreading her arms, legs, and hair, she fell down in the pasturing ground in her original form as a Rakshasi, as Vritrasura had fallen when killed by the thunderbolt of Indra. Please repeat. In this way, the demon Putana, very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna, lost her life. O King Parikshit, opening her mouth wide and spreading her arms, legs, and hair, she fell down in the pasturing ground in her original form as a Rakshasi, as Vritrasura had fallen when killed by the thunderbolt of Indra. Putana was a great Rakshasi who knew the art of covering her original form by mystic power. But when she was killed, her mystic power could not hide her, and she appeared in her original form. Jakshuan Manitanjana Tasman Shri Mukam Karoti Vachalam Kam Garati Yat Kripatam Shri Guru Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Guru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna. Shri Shri Radha Mohan Krishna Balaram Shri Jagannath Balaram Shri Punitaj Radha Shri Hare Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur has covered the importance of these demons. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इन दानवों की महत्ता के बारे में बताते हैं. There are 3 levels. इसके 3 स्तर हैं. Mythical, कि कथा के रूप में, historical, ऐतिहासिक, metaphorical, और अलंकारिक, and then transcendental. और उसके बाद दिव्य स्तर. So there's the material reality, तो एक भौतिक सत्य है, and then there's the spirituality. और उसके बाद आध्यात्मिकता है. So Krishna's pastimes happen on the transcendental level, तो भगवान कृष्ण की जो लीला है वो दिव्य स्तर पर होती हैं, and they take us to the transcendental level of reality. और वे हमें दिव्य सत्ता की ओर लेकर चलती हैं. So Putana is just the beginning. तो पूतना से तो अभी शुरुआत हो रही है. But all these demons that Krishna will kill, they represent something. तो जितने भी असुरों का भगवान श्री कृष्ण वध करेंगे वो किसी को प्रदर्शित करते हैं. And Srila Bhaktivinoda Thakur mentions और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं that these are all the anarthas. कि ये सब अनर्थ हैं.
in our hearts. हमारे हृदय के, Misgivings and misconceptions. जो हमारी बुरी आदतें और गलत धारणाएं हैं, And these are destroyed when we hear the pastimes of the Lord. और ये सब नष्ट हो जाती है जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। These pastimes destroy the misconceptions and the attachments, and our hearts can become transcendental. तो ये जो लीलाएं हैं ये हमारे हृदय के कल्मश को, उसकी आसक्ति को दूर कर उसे शुद्ध बनाती हैं। So we were studying some of the work of Chaitanya Chandra Prabhu. हम श्रीपाद चैतन्य चंद्र प्रभु के कुछ पढ़ रहे थे उनके कार्य को, And he was trying to give a historical understanding of the times when Srila Bhaktivinoda Thakur appeared. वह ऐतिहासिक रूप से जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रकट हुए थे उस समय का ऐतिहासिक महत्व बता रहे थे। Up until that time, Vaishnavism and Vedic understanding was all pretty much accepted. और उस समय तक वैष्णव और जो वैदिक समझ है उसको काफी समझा जाता था। Even the Muslims, when they invaded, they didn't compete with the Vedic understanding. यहाँ तक कि मुसलमान भी जो वैदिक ज्ञान है उससे होड़ नहीं लगाते थे। But the British, लेकिन जो ब्रिटिश हैं, the British brought their rationalism, लेकिन ये ब्रिटिश लोगों ने अपना तार्किक ज्ञान लेकर आए, and that became very popular to the young Indian. और यह भारतीय नौजवानों के लिए काफी लोकप्रिय साबित हुआ। And also Srila Bhaktivinoda. और साथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, People became Anglophiles. वो भी थोड़ा अंग्रेजी हो गए। But Srila Bhaktivinoda Thakur, after he acquired, and it took some time, the Chaitanya Charitamrita, then he began to appreciate the wonderful position of Sri Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को श्री चैतन्य चरितामृत मिली तो फिर वो इस दिव्य ज्ञान की काफी सराहना करने लगे। And how the Vaishnava understanding is the topmost. कि किस प्रकार से यह जो वैष्णव संस्कृति है यही सर्वोत्तम है। So, Krishna consciousness means a gradual process. तो कृष्ण भावनामृत यह एक क्रम दर क्रम का विधि है, प्रक्रिया है। Chaitanya Chandra Prabhu gives a nice aphorism. He says, from your place, तो चैतन्य चंद्र प्रभु एक बढ़िया उदाहरण देते हैं कि आप अपनी जगह से, at your pace, और अपनी गति से access the grace. आप कृपा को प्राप्त करिए। So Putana, they were known as Kecharis. तो पूतना को खिचड़ी कहा जाता था। K means air, sky, खे का अर्थ वायु, आकाश, and Chari means one who moves. चरी का मतलब चरण करना, चलना। So she was a brand of demon that could fly in the sky. तो वह एक इस प्रकार की राक्षसी थी जो हवा में उड़ सकती थी। She didn't need the drone. तो उसे ड्रोन की जरूरत नहीं पड़ती थी। But and she was able to conceal her real identity. और वह अपने वास्तविक रूप को छुपाने में सक्षम थी। She was a horrible demon. वह एक दुर्दांत राक्षसी थी। But she made herself appear as a beautiful woman. लेकिन वह एक सुंदर स्त्री के रूप में अपने आप को प्रकट की। So beautiful that even the residents of Vrindavan, Mother Yashoda, Mother Rohini, all of them, they were overwhelmed by her beauty. तो इतना सुंदर कि स्वयं माता यशोदा और माता रोहिणी भी उसके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो गई थी। They were thinking that the goddess of fortune has come. वे सोच रही थी कि स्वयं लक्ष्मी देवी आ चुकी हैं, So she must come and bless my child. तो उसने आकर हमारे संतान को आशीर्वाद देना चाहिए।
So appearances can be deceiving. तो बाहरी रूप से वह धोखा देने का प्रयास कर रही थी. So she went into the bedroom with Krishna, placed Krishna on her breast, and she got the surprise of her life. तो वो भगवान कृष्ण के पास गई जहां पर वह लेटे थे, उन्हें स्तनपान कराई और लेकिन उसको अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी. And as we've read in some of the previous purports, Krishna was very angry with her. और हमने पिछले कुछ तात्पर्य में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण उस पर क्रुद्ध थे. Because it was her pastime of killing innocent little children. क्योंकि जो पूतना है वह बाल घातिनी थी. So Krishna sucked out her life along with her, sucked her breast with the air of life. तो भगवान कृष्ण स्तन के साथ साथ उसकी प्राणवायु भी चूस ली. And as we read yesterday, he was kicking her at the same time. और हम उसमें कल पढ़े कि भगवान कृष्ण साथ ही उसे लात भी मार रहे थे. Not that Krishna was disturbed in the least bit by her. लेकिन भगवान कृष्ण उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए थे. But he wanted to punish her for her nefarious activities. लेकिन वह उसके कुकर्मों के कारण उसे सजा देना चाह रहे थे. So she was masking her real identity. तो वह अपनी जो मूल स्वरूप है उसको छुपा कर रखी थी. And she was using her beauty और अपने सौंदर्य का उपयोग कर रही थी to deceive others दूसरों को छलने के लिए. and make others do her bidding. Do their bidding. Her bidding. What she wanted. और जैसे और लोग वो जो चाहे लोग ऐसा करें, इसलिए अपना रूप प्रकट की थी. So Putana represents, among other things, false hopes. तो पूतना हमारी झूठी आशाओं को प्रदर्शित करती है. False instruction. गलत उपदेशों को. Teachers are meant to show the right path. जो हमें सही रास्ते से जाने से रोकती है. जो शिक्षक हैं वो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं. Self-interested, selfish people. जो स्वार्थी होते हैं They want to become spiritual teachers. वे आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते हैं. And they use the respect and reverence that is given spiritual teachers और वह अपने लिए जो मान सम्मान श्रद्धा है उसका उपयोग करना चाहते हैं to abuse and exploit people. जिससे वो लोगों का शोषण कर सके. They use their influence to destroy a person's faith. तो वह अपने प्रभाव से लोगों के विश्वास श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास करते हैं. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, he calls the modern educational system, he even mentions the parents and relatives as being influential in bewildering the children of this age. तो श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बताते हैं कि जो आधुनिक शैक्षिक प्रणाली है, यहाँ तक कि माता पिता शिक्षक, ये सब बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं. In so many places, Prabhupada called it the slaughterhouse श्री प्रभुपाद इसे कसाई घर कहा कहते थे. of modern education. जो आधुनिक शैक्षिक प्रणाली कसाई घर है. Luckily, in India, the devotees are smart enough not to be slaughtered in the slaughterhouse. तो सौभाग्य से भारत में भक्त जो हैं थोड़ा सौभाग्यशाली हैं कि वो इस कसाई घर में मारने से जाने से बचे हैं. There's one time a pastime, maybe it's in the Hitopadesh. हितोपदेश में कहानी आती है It tells the story of the monkey and the crocodile. जिसमें एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी है. The monkey and the crocodile were good friends. वो बंदर और मगरमच्छ बढ़िया मित्र थे. And they used to play together on the bank of the river. और वो दोनों साथ में एक नदी के किनारे खेला भी करते थे.
But the crocodile's wife, when she heard that her husband was playing with the monkey, लेकिन जब उस मगरमच्छ की पत्नी को पता चला कि वो बंदर के साथ खेल रहा है, said, "Oh, you must bring your friend to our house. उसने बोला, अरे तुमको अपने मित्र को हमारे साथ भी लेकर आना चाहिए। I want to eat his heart." मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ। So, as husbands are often influenced by their wives, क्योंकि जो not devotee wives, पति जो है अक्सर अपनी पत्नी के वश में रहते हैं, ultimately he had to submit to her. तो उस मगरमच्छ को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। So then he offered, "Oh, come." He told the monkey, "Come right in my back. I'll take you to my house and you can see where I live." तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि चलो तुम मेरे घर आओ, मैं तुमको लेके चलूंगा, अपना घर दिखाता हूँ। So the monkey jumped on his back and he took. तो मंकी उसके पीठ पर बैठ गया और जाने लगे दोनों। And the crocodile took him to his home, और मगरमच्छ उसे अपने घर ले गया, to his wife, अपनी पत्नी के पास, and they attacked him, saying that now we will eat your heart. और वो दोनों उस पर आक्रमण कर दिए, ये बोल के कि अब हम तुम्हारा कलेजा खाना चाहते हैं। He said, "My heart? You didn't tell me you wanted my heart. I left my heart at home." तो बंदर ने कहा, मेरा कलेजा खाना चाहती हो, इसके बारे में पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो अपना कलेजा पेड़ पे ही छोड़ आया। "Don't worry, you can take me home. I'll get my heart and then you can eat it." तो चिंता मत करो, मुझको वापस छोड़ दो, मैं अपना हृदय लेके आऊंगा और फिर उसको वापस तुम लोग खा लेना। So the crocodile wasn't too smart. तो जो मगरमच्छ ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, So he took the monkey back, तो बंदर को वापस ले गया, and the monkey jumped off the crocodile और बंदर जो है मगरमच्छ से उछलकर वापस चला गया, and picked up rocks and he was throwing them at the crocodile. और फिर मगरमच्छ के ऊपर वो पत्थर फेंकने लगा। So the moral of the story तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? is that the devotee keeps his heart or her heart just for Krishna. कि जो भक्त है वो अपना हृदय सिर्फ कृष्ण के लिए रखता है, Everything in this material world is false. क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ असत्य है, It मिथ्या है, is not as it appears to be. क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। Chaitanya Prabhu was mentioning about discernibility. तो चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं Discernibility. चीजों को पहचानने के बारे में। Be able to discern. In some countries, you're not allowed to advertise to children. तो कुछ देशों में बच्चों के सामने कुछ विज्ञापन नहीं कर सकते हैं प्रचार, Because they don't have any ability to choose. Everything is a toy. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खिलौने हैं। बच्चों के अंदर क्योंकि पहचानने की समझ नहीं होती है। So, unfortunately, with the internet, children are exposed to so many horrible things. लेकिन दुर्भाग्यवश इंटरनेट के कारण बच्चे अब इन सारी चीजों से रूबरू हो सकते हैं, The little children and the big children. चाहे छोटे हों या बड़े, सारे बच्चे। So the modern culture wants to destroy this faith. तो आधुनिक जो सभ्यता है इस श्रद्धा विश्वास को तोड़ना चाहती है। Materialism just seeks for people to satisfy their senses and their material desires. तो भौतिकतावादी सभ्यता में उनको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख किया जाता है। And therefore, modern civilization has nothing to offer people at all. तो इसलिए जो आधुनिक सभ्यता के पास लोगों को देने लिए कुछ भी नहीं है। We have a friend in South Africa. हमारा साउथ अफ्रीका में एक मित्र है, He's a therapist. He does what is called core release therapy. तो वह एक थेरेपिस्ट है जो कोई थेरेपी किया करते हैं। It's like chiropractor. Chiropractor. कायरोप्रैक्टर, हड्डियां चटकाते हैं। So he works for a very wealthy Jewish gentleman.
तो एक बहुत ही धनी जूइश सज्जन के लिए वो काम करते हैं. And this gentleman is a life coach. और उस सज्जन के पास एक लाइफ कोच के लिए लाइफ कोच हैं वो. He specializes in working with wealthy Jewish people. तो वो धनी जूइश लोगों के लिए काम करते हैं, उसमें विशेषता प्राप्त है. And he sent this video of this gentleman speaking. और उस सज्जन को उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें वो कुछ कह रहे थे. And he was talking to a group of people and he was telling them that your children they may say, well, I want to smoke, I want to drink, I want to do these things, I want to experience. तो कह रहे थे, एक वीडियो में कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे कि हमारे आपके बच्चे कह सकते हैं कि मैं सिगरेट धूम्रपान करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बहुत सारे काम गलत काम करना चाहता हूँ. And his response was, that means you're a failure. इसका मतलब है कि आप विफल हो गए हैं. You have to excite yourself with alcohol and meat. He even said meat and sex and all these things because you can't find any goodness with your own understanding. तो आपको ये जो मदिरा है, यौन संबंध है, इसके लिए अपने आप को इसलिए उत्तेजित करना चाहता है क्योंकि आप में सत्वगुण की कमी है, आप किसी चीज में अच्छा नहीं ढूंढ पाते हैं. So Krishna consciousness is so wonderful. तो कृष्ण का भावनामृत इतना अद्भुत है that Srila Prabhupada and all the great acharyas, they're showing us where the real happiness can be found. कि श्रील प्रभुपाद और सारे आचार्य हमें बता रहे हैं कि वास्तविक सुख कहाँ मिल सकता है. That happiness comes not from materialistic endeavors, कि जो जितने भी भौतिक प्रयास हैं उनसे हमें सुख नहीं मिलता, but by serving the pure devotees and the Supreme Lord. लेकिन शुद्ध भक्त और भगवान की सेवा करने से आनंद मिलता है. So Putana is a witch. पूतना एक राक्षसी है. We sing the song in Cape Town. I like to sing a little bhajan on Saturdays before we read about Srila Prabhupada. तो केप टाउन में शनिवार को श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ पढ़ने के पहले हम एक भजन गाते हैं. And we've been singing Jeev Jago. और हम गाते हैं जीव जागो. Jeev Jago, Jeev Jago. Gora Chanda Bole. और हम Kota Nidra Jayamite. Pisa Chira Kori. How long will you sleep on the lap of the witch called Maya? और हम ये गीत गाते हैं कि आप कितने समय तक इस पिशाची माया रूपी पिशाची की गोद में कब तक सोते रहोगे. So this is what material life is offering. Some foolish engagements and useless activities that ultimately don't give anyone any happiness. तो कब तक हम भला इन भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहेंगे जो हमें कभी जो पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण काम है, हमें परेशान करती हैं और उसका कोई अर्थ नहीं है. So if we're intelligent, यदि हम बुद्धिमान हैं then we can avoid all the pitfalls of materialistic life. तो इस भौतिकतावादी जीवन के जितने भी दोष हैं उनसे हम बच सकते हैं. We can live a fruitful life. हम एक सफल जीवन जी सकते हैं And we can do good to others. और हम दूसरों के लिए भी भला कर सकते हैं. That's what the sages did. ऐसा ही ऋषि मुनियों ने किया. A sage understood, I only need a place to lie down. I only need some fruits and roots. I'm very easily satisfied. But there are so many people that are suffering. I can help them. तो एक ऋषि क्या करते हैं, वो बहुत ये समझ जाते हैं उन्हें सोने के लिए सिर्फ थोड़ा जगह चाहिए, खाने के लिए फल मूल चाहिए, लेकिन इतने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जो बाकी लोग कष्ट पा रहे हैं उनका मैं कुछ भला कर सकता हूँ. Anarto pasamam shakshad bhakti yoga madhoksajay lokasya janato vidvans chakre satvata samita. अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता. The material miseries of the living entity which are superfluous to him,
जो भौतिकतावादी वाले लोगों की जो कष्ट हैं वह ऊपरी स्तर पर ही रहते हैं, can be directly mitigated by the process of devotional service. उनको तुरंत ही उन कष्टों का नाश किया जा सकता है भक्ति योग के माध्यम से। But the mass of people do not know this. लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, And therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature. इसीलिए श्रील व्यासदेव ने इन वैदिक ग्रंथों का संकलन किया है, which is in relation to the supreme truth. जो कि परम सत्य भगवान से संबंधित है। So you are all sages, sadhus. आप सब साधु हैं, ऋषि मुनि हैं। Perfect your spiritual education आप अपनी इस आध्यात्मिक शिक्षा को सफल करिए, पूर्ण करिए, and offer it to the foolish, confused souls. और इन्हें जो मूर्ख और संदेहास्पद बद्ध जीव हैं उनको प्रस्तुत करिए, They don't think there's an alternative. क्योंकि उनको इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। Everyone is doing it. सब लोग यही काम कर रहे हैं, There is an alternative, लेकिन वास्तव में एक विकल्प है, and it will be the happy alternative और यह एक बहुत ही सफल विकल्प है to the foolish world that we live in. मूर्ख लोगों के लिए एक बहुत ही सफल विकल्प है। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Any comments or questions? Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. We talked about the four levels of reality. One is transcendental, one is mythical. I was just wondering if you can elaborate on that. Well, mythical. Well, let's start with. Well, let's say mythical. If it's old, real old, and you don't have a fossil record, then people will say it's mythological. So there's that level of reality where you can't really prove, but the story is already there. The information, the pastime, or the myth is there. So, but it's still valid. Then there's the historical, which means it can be proved by historical record. Metaphorical, that below the appearance of things, there's something more substantial. And this is what Srila Bhakti was trying to show, that Krishna's pastimes are very deep. There's a great deep meaning to all of Krishna's pastimes. They're not just nice things that happen, but there is a deep meaning to each and every time that Krishna killed a demon. And that metaphorical, just like whenever Krishna Janmashtami comes by, then it's understood that the Sadgarbhasuras, those entities that took birth from Devaki's womb before Balaram and Krishna appeared, they were the sons of Marichi, and they had criticized Lord Brahma. That time when Lord Brahma created Vak, his own daughter, and he became attracted to his own daughter sexually. Then Marichi and the great sages, they were saying, well, this has never really happened before. And but the sons of Marichi, they thought, such a useless Brahma, such an idiot, like that, and because of their impudence, they were cursed. And they became the sons of Hiranyakashipu's Kalanemi, yes, previous birth. So they did similar to what Hiranyakashipu did.
They went to perform austerities to get some benediction. But when Hiranyakashipu found out that they were also trying to do what he did, then he cursed them. He cursed them that you will be killed by your father, your own father. So he was in the next birth. That was his father. So there was a deeper understanding. But what do those Sadgarbhas suras stand for? Kama, Krodha, Lobha, Matsarya, Mada. So they stand for those whips, those dirts in the heart. So it's metaphorical, but it allows us to access a deeper level of understanding. I don't know if that helps. And of course, there's the transcendental. But these levels help us ultimately appreciate the transcendental platform. And that's what Krishna's pastimes do. They bring us into the transcendental level of reality. There's the material world. Everything's going on here according to the material energy. And then there's the spiritual world, where everything is going on. So, it's okay. प्रभु का प्रश्न था कि प्रभु का प्रश्न ये था कि जो अलग अलग तरह की वास्तविकता के बारे में बताया, जैसे दिव्य सत्य या फिर ऐतिहासिक सत्य, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार करने को प्रभु के लिए प्रकाश डालने के लिए कहा था प्रभु जी। तो प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके के जो सत्य हैं, रियलिटी हैं, वो एक तो मिथिकल है, जो कि कथात्मक के रूप में है। तो इसको इस प्रकार से समझी जा सकती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत ही पुरानी कथा है जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं किसी खोज के माध्यम से, या फिर उसका कोई फॉसिल ना मिले, उसका कुछ हमें ठोस सबूत ना मिले, साक्ष्य ना मिले, हम तब अगर हम उसे सिद्ध नहीं कर सकते तो उसे कथात्मक सत्य बताते हैं। और ऐतिहासिक सत्य वो होते हैं जिनको हम किसी न किसी तरीके से, किसी रिकॉर्ड के माध्यम से हम उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलंकारिक या फिर मेटाफोरिकल जो सत्य होते हैं, वो ये जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि ये सिर्फ कुछ बहुत ही अच्छी घटनाएं नहीं है, ये लीला है जिनका बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जैसे कि हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में जानते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम के प्रकट होने के पहले सडगर्भ आए थे, जो कि मरीचि के पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी की आलोचना कर दी थी जब वो स्वयं की पुत्री जो वाग देवी हैं उनसे आकर्षित हो गए थे। तो ये मरीचि के पुत्र अपने अपराध के कारण फिर असुर के रूप में प्रकट होते हैं। तो कालांतर में वो कालनेमी के पुत्र फिर हिरण्यकशिपु के पुत्र बनते हैं। तो ये काफी गहरा अर्थ है, लेकिन इससे भी ज्यादा और अर्थ ये है कि वो हमारे छवों अनर्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो ये है अलंकारिक सत्य। इसके परे है दिव्य सत्य, जो हमें दिव्य स्तर तक लेके जाता है। जैसे ये आध्यात्मिक जगत है, सब कुछ इस दुनिया में हो रहा है भौतिक स्तर पर, लेकिन इसी तरह एक आध्यात्मिक जगत भी है जहाँ पे सब कुछ भगवान कृष्ण की लीलाएं होती हैं। ये दिव्य स्तर हमें वहां पर लेके जाता है। So this is a nice point that Prabhu raised about from your place. We have to start where we're at. At your pace. Everyone is in a different situation. Some people are fortunate, they're unattached. Some people are greatly attached with families, responsibilities, jobs, homes, houses, HPs, and everything else. But whatever place, your place. So everyone's looking for authenticity. तो यहाँ पे प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है कि आप जिस भी जगह पर हैं उसी
से अपनी गति से शुरू कर दीजिए। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो ज्यादा आसक्त नहीं होते, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा आसक्त होते हैं। Authentic. These days, people are looking for authentic. लोग अभी इस दुनिया में प्रामाणिकता खोज रहे हैं। The real thing. कि असल चीज क्या है? Is it really Nike? क्या ये नाइकी या फिर अलग कोई ब्रांड से इस प्रकार? Is it really Vans? या फिर बेंज? Sorry. Is it really this or really that? या फिर अलग अलग ब्रांड्स? But we have our own authenticity. लेकिन हमारे पास स्वयं की खुद की प्रामाणिकता है। We are unique. हम अपने आप में हटके हैं। We don't have to imitate anyone. हमें किसी का अनुकरण की आवश्यकता नहीं। And the great sages, the great devotees, they're showing us और जो महान ऋषि महान आचार्य हमें बता रहे हैं how we can be ourselves कि हम जो खुद हैं वह कैसे बन के रह सकते हैं and fully related with the Supreme Lord. और पूरी तरीके से भगवान से किस तरह संबंधित हो सकते हैं। So it is a great a journey. तो एक लंबी यात्रा है। Ye yatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि हम। Everyone follows my path in all respects. तो जितने भी लोग हैं वह सब मेरे ही पथ का अनुगमन कर रहे हैं। As they surrender unto me, I reward them accordingly. जो मेरी जिस प्रकार से शरण लेते हैं मैं उनको उसी रूप में पुरस्कृत करता हूँ। So Krishna is a person. तो भगवान कृष्ण एक व्यक्ति हैं। Shri Shri Radha Madan Mohan, they're people. वे लोग भी व्यक्ति हैं। Shri Shri Krishna Balaram, they're people. वो भी लोग ही हैं, व्यक्ति हैं। कृष्ण Shri Shri बलराम। Jagannath Baladev Subhadra are persons. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी व्यक्ति हैं। Shri Shri Gaunitai are also personalities. श्री श्री गौरीताई भी व्यक्तित्व हैं। Shri Shri Lakshmi Nrsimhadev and Prahlad Nrsimhadev, they're also personalities. तो प्रहलाद नृसिंहदेव भी एक व्यक्तित्व हैं। And it was one of the great gifts that Srila Prabhupada gave यह to the West and to the East, एक अनुपम उपहार श्रील प्रभुपाद ने जो पश्चिम और पूर्वी देशों के लोगों को दिया, to help us understand that we can relate with Krishna कि उन्होंने हमें यह समझने का अवसर दिया कि हम भगवान कृष्ण से संबंध बना सकते हैं in a very personal way. बहुत ही व्यक्तिगत रूप से। In the West, they had no idea what deities are. पश्चिम में किसी को ये नहीं मालूम था कि विग्रह क्या होते हैं। If you hear the story from Mother Malati about, and she shoplifted a little Jagannath doll. तो अगर आप मालती माता जी से कहानी सुनेंगे कि उन्होंने एक दुकान से जगन्नाथ जी के विग्रह को उठा लिया था And they brought it to Srila Prabhupada. और उसे श्रील प्रभुपाद के पास लेकर आई थी And they placed it on his desk. और उसे श्रील प्रभुपाद के टेबल पे रख दिया। And Srila Prabhupada immediately offered obeisances. श्रील प्रभुपाद ने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। And they were wondering, what had they done? What did they do? और फिर वो लोग अचंभे में पड़ गए कि भले उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। And then Prabhupada told them, there are two other ones. और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इनके साथ दो और रहे होंगे। I think they bought them. मुझे लगता है कि वो भी लाए होंगे। And then Prabhupada told Shyamasundara, you carve the deities. और श्रील प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु जी से कहा कि आप विग्रहों की नक्काशी करिए। And I think Lord Jagannath Baladev Subhadra, I've never been to Puri, but these are the biggest deities I've seen. And very powerful and majestic. तो प्रभु जी बता रहे कि मैं भले पुरी कभी नहीं गया हूँ, लेकिन ये जगन्नाथ जी के सबसे बड़े विग्रह हैं जो मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही शक्तिशाली हैं, करिश्मा करते हैं बहुत। So Prabhupada told Shyamasundara, you carve big souls.
श्रील प्रभुपाद ने श्रीपाद श्याम सुंदर प्रभु से नक्काशी करने को कहा। And he was a carpenter, he was an artist. तो वह एक कलाकार थे, शिल्पकार थे। And he painted them according to the colors Prabhupada mentioned. और जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने बताया उस प्रकार से बना के रंग भी दिए। And Prabhupada told him, you do this. और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप इसे करो, You wake them up in the morning, आप इन्हें सुबह भोर में उठाओ, you offer them some sweets, कुछ मिठाई का भोग लगाओ, कुछ दूध चढ़ाओ, and you dance before them इनके सामने नृत्य करो, and have kirtan. कीर्तन करो। And they didn't know what to expect. और उन्हें मालूम नहीं था कि आगे और क्या होगा। But those devotees realized लेकिन उन भक्तों को फिर साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, there's somebody here. यहाँ पर कोई है। So it's a wonderful opportunity that to worship the deity. ये बहुत ही बढ़िया अवसर है श्री विग्रहों की आराधना करना। And it makes understanding Krishna as a person very easy. इससे भगवान श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में हम बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। There are so many stories. ऐसी कई सारी कहानियां हैं। Sakshi Gopal. साक्षी गोपाल भगवान। So many stories of the deities विग्रहों की कई सारी कहानियां हैं responding to different devotees. जो भक्तों के साथ आदान प्रदान करती हैं। So their lordships will respond तो भगवान के विग्रह भी आदान प्रदान करते हैं to our devotional service. हमारी भक्तिमयी सेवाओं को। And when they're pleased, और जब वे प्रसन्न होते हैं they will reveal themselves. वे अपने आप को प्रकट करेंगे। So Bhakti True Swami has done a great service for the world and especially for the people of Ujjain. श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने पूरी दुनिया के लिए और विशेषकर उज्जैन वासियों के लिए बहुत सारी सेवा की है By establishing the temple here. यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करके। Srila Prabhupada visited South Africa in 1975, October. अक्टूबर 1975 में श्री प्रभुपाद दक्षिणी अफ्रीका गए थे। And 75. अक्टूबर 1975। So अभी it's अक्टूबर है, almost 50 years. करीब करीब 50 साल पहले। And he told the devotees, उन्होंने भक्तों को बताया build a temple कि एक मंदिर का निर्माण करो in Durban. डरबन में। He said, have Jagannath Rath Yatra जगन्नाथ रथ यात्रा निकालो and preach to the Indian people. और भारतीयों को प्रचार करो। So the temple was built. तो मंदिर बना। Myself, Bhakti Chaitanya Swami, other devotees. For 5 years we were traveling, collecting funds. तो मैं श्री श्रीमद भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज और अन्य भी कई सारे भक्त अलग अलग जगह यात्रा करके। And the temple is such a powerful weapon. रुपए एकत्रित करे थे और ये मंदिर बहुत ही उपयोगी हथियार साबित हुआ For preaching Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। And of course, Srila Prabhupada loved Rath Yatra. और निश्चित ही श्री प्रभुपाद रथ यात्रा बहुत पसंद करते थे। So I hope you're here still when Rath Yatra happens. तो हम आशा करते हैं यहाँ पे भी रथ यात्रा होती ही होगी। But Srila Prabhupada did so much, and we simply have to fill in. Vishnu Jan Swami, he asked Srila Prabhupada, he said that Bhaktivinoda Thakur mentioned that he had left his work unfinished. तो श्री प्रभुपाद ने इतना कुछ किया, हमें सिर्फ जारी रखना है। श्री श्रीमद विष्णु जन स्वामी महाराज कहते हैं कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। Prabhupada said he could have finished it. श्री प्रभुपाद ने कहा कि वो स्वयं इसे पूरा कर सकते थे, He's a Vaishnava. क्योंकि वे वैष्णव हैं। He's all powerful. वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, शक्तिमान है। He left something for us to do. उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ दिया है। So we can, while we're here, Dandara Charana Sevi, Bhakta Sanivas, Janame Janame Hoy. तो हम यहाँ पर हैं, तादेरे चरण से भी भक्त सनिवास जन्मे जन्मे होई यही अभिलाष।
The perfection of life is to perform devotional service in the association of devotees. जीवन की सफलता है कि भगवान की भक्ति में ही सेवा करें और भक्तों का संग लें। That's all the devotee wants. यही एक भक्त की अभिलाषा होती है। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srila Prabhupada ki jai. His Grace मेधावी प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की